देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today let us learn Bhagavad Gita chapter 2 Sankhya Yoga shloka numbers 41 to 45. Repeat after me. व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन एकेह कुरु नन्दन एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बहुशाखायनन्ताश्च बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां बुद्धयो व्यवसायिनां बुद्धयो व्यवसायिनां Let us chant together. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. Now you chant. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. Listen to me. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. Repeat after me. Shloka number 42. यामिमां पुष्पितां वाचं यामिमां पुष्पितां वाचं यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः 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 वेदवादरताः पार्थ वेदवादरताः पार्थ वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः नान्यदस्तीति वादिनः नान्यदस्तीति वादिनः. Let us chant together. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः. Now you chant. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः. Listen to me. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः. Repeat after me. Shloka number 43. कामात्मानः स्वर्गपरा कामात्मानः स्वर्गपरा कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां जन्म कर्म फलप्रदां जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां क्रिया विशेष बहुलां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य गतिं प्रति. Let us chant together. कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति. Now you chant. कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति. Listen to me.
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति. Repeat after me. Shloka number 44. भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दया पहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. Let us chant together. भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. Now you chant. भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. Listen to me. भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. Repeat after me. Shloka number 45. Last shloka of the day. त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्. Let us chant together. त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्. Now you chant. त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्. Listen to me. त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्. Listen to all the 5 shlokas of the day. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दयापहृतचेतसां
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। O Arjuna, in this yoga of selfless action, there is one pointed determination to attain equanimity. Undecided is scattered in many directions. Earthly hankerings are innumerable and desire-ridden. O Partha, the unwise utter a flowery speech. The ritualistic portions of the Vedas, Karma Kanda, pander merely to the low tastes of the crude happiness hunters. Rituals simply distract the mind for the attainment of heaven or the chances of a good life in the next birth. There is no fixity of mind or samadhi for them who cling to pleasure and power. The three gunas are the main subject matter of the Vedas. Be free from these three attributes. Wherever there is name and form, there is guna. Abide in the eternal truth and be free from the pairs of opposites, even-minded, free from acquisition and preservation, and established in the self alone. हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर बुद्धि वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुशाखाओं वाली होती है। समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग के अलावा दूसरी कोई परम प्राप्य वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित अथवा दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, नित्य निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। योगक्षेम की याचना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा।